Hello बच्चों, welcome to JEENious classes. Today is our third class and the second part of functional equation. I hope you people have all seen my past two videos and especially the second class on functional equation. So today we are going to continue with the same topic, functional equations, in more advanced level. So let's begin the class. But before starting, those who are new to my channel, please do subscribe and press the bell icon so that you get notified about all the new videos I upload in this channel. If you like my class, don't forget to hit the like button and share it with your friends. Don't forget to comment me if you face any problem during my class. So let's begin. So now we are going to remember some standard functional equation. We have already done two standard functional equation in my previous class, which are like this. Fx into f of 1 by x. अगर इसको equals to fx plus f of 1 by x है, तो हम लोग क्या लिए थे? fx equals to 1 plus minus x to the power n. And according to the given condition, यहाँ पर प्लस होगा या माइनस होगा, ये हम लोग डिटरमाइन किए थे. This all I have done in my previous class. And fx into f of 1 by x अगर 1 है, then fx equals to plus minus x to the power n. ये दोनों standard functional equation हम लोग कर चुके हैं. Now, in this class, we are going to remember four such functional equations which are standard, which you can use anywhere in your problem, right? और इसका जो proof part है, that you can see from any textbook. I'm not going to prove here, otherwise ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. तुम लोग if you are really interested to see how it is coming, then you can see any standard book for its proof. पहला जो स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन है वो है f of x plus y equals to fx plus fy. अगर ये है, then we will assume that fx is nothing but ax. If f of x plus y equals to fx into fy, then we will take fx as a to the power x. अगर fxy equals to fx plus fy है, then we will take fx as a log x base e. And the fourth one that we are going to remember is that if f of xy equals to fx into fy है, then we will assume fx is x to the power a. Okay? ये चारों standard formula we will remember. Now let us come for some problems. देखो बच्चों, ये क्वेश्चन यहां पर बोला है let fx be a function satisfying this one. What is that? f of x plus y equals to fx into fy for all xy belongs to real value. मतलब यहां पर in place of x and y you can put any real value, right? और दिया हुआ है क्या? f1 equals to 3. From here, we have to find out sigma r from 1 to n fr. मतलब यहां पर मुझे पहले निकालना है what is my fx. Okay? So चलो. देखो बच्चों, f of x plus y, अभी हम लोग किया, if it is fx into fy, then what we will assume? We will assume that fx equals to a to the power x. Okay? Now they have given f of 1 is 3. इसका मतलब क्या हुआ? a to the power 1 is 3. That implies a is nothing but 3. Actually ये वैल्यू तुम्हें दे देगा to find out the value of the constant a. So यहां से मेरा निकल गया क्या? a is nothing but 3. Therefore my fx is basically 3 to the power x. Right? अभी मुझे निकालना है सिग्मा r equals to 1 to n. What is my fr? That is sigma r from 1 to n 3 to the power r. That gives us, if I remove the sigma sign, we are going to have 3 plus 3 square plus 3 cube plus so on
3 to the power n. Now this is in GP series. Let me take 3 common. So it is coming something like this. Now we are simply using the summation for n terms of a GP series whose first term is 1 and common ratio is 3. Therefore, it will be 3 times 3 to the power n minus 1 divided by 3 minus 1. That gives us 3 by 2, 3 to the power n minus 1. Right? So, this is the answer for this sum. It's 3 by 2, 3 to the power n minus 1. That's your answer. Is it clear? Let us take another problem. देखो बच्चों यहाँ पर क्या बोला है? These are all very basic sums that I have selected because you must know how we are using the standard functional equations. f of x plus y ये क्या है? fx plus fy. In this case, we will assume that our fx is ax. Okay, fx is ax. Now, they have given that f1 is 5. Again, we will put it to get the value of a. So, f1 is coming like x only. I'm sorry. fx is coming to a only. And this is equals to 5. Therefore, we got that a is nothing but 5. Therefore, our fx becomes 5x, right? Now we have to find out this sigma. R starts from 1 to 100. F of R, that is, so that gives us R equals to 1 to 100 FR. So I can take 5 outside my sigma sign. So we are left with R. And if I remove the sigma, we are going to have so this is the sum of first 100 natural terms. So the formula is, we all know the formula, the sum of this formula is, sum of the first n natural terms is n into n plus 1 by 2. So in this case, it will be 100 into 101 divided by 2. That gives us 5 into 50 into 101. So we are having 50 into 505. And we are getting the answer like 25250. And that is the answer for this question. Is it clear to all of you? Let's move for the next one. देखो बच्चों यहां पर बोला है find fx if f of x plus 1 is x square minus 3x plus 2. So let me do one thing. Let us say y is equals to x plus 1. So from here we can write x is nothing but y minus 1. Okay. So we are having if y equals to, so if I open the brackets, we are going to have, so we are going to have here, so what we got actually is fy is y square minus 5y plus 6. So I can replace y by x, so we will get fx is x square minus 5x plus 6. That's it. Is it clear to all of you? So this is the function that we actually have to find out in the question. Clear हुआ बच्चों? Okay. चलो next problem. देखो यहां पर बोला है fx is a polynomial such that fx into fy is f of xy minus fx minus fy. For this functional equation, they have said it is true for all xy belongs to real value. Is it clear?
और बोला है क्या, F2 is equals to 7. Okay? Now, is this functional equation is any of our standard form? No. तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग we will try to manipulate this functional equation so that it falls in that standard functional equation form. Is it clear to all of you? Okay, बच्चों ये कैसे करेंगे, कैसे हम लोग मैनिपुलेट करेंगे इस फंक्शनल इक्वेशन को सच दैट ये फंक्शनल इक्वेशन मेरा कोई स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन बन जाए। देखो बच्चों, तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, fx प्लस fy को हम क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आया। तो राइट हैंड साइड में मेरा क्या बचा है, f ऑफ एक्स वाई। अभी बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, हम बोथ साइड्स में 1 ऐड कर दे रहे हैं, हम बोथ साइड्स में 1 ऐड कर दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, सच दैट तुम्हारा जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको तुम फैक्टराइज कर सको। जैसे यहां पर I can factorize in the left hand side like 1 plus fx plus fy अगर हम कॉमन लेते तो it becomes 1 plus fx which is equals to f of xy plus 1. Okay? Now, यहां से मुझे क्या मिल रहा है, 1 plus fx into 1 plus fy. This is equals to 1 plus f of xy. Is it clear? बच्चों देखो, अगर हम hx इक्वल्स टू fx प्लस 1 लेते हैं, अगर hx इक्वल्स टू fx प्लस 1 लेते हैं, सो h ऑफ y कितना आएगा, f ऑफ y प्लस 1, h ऑफ xy कितना आएगा, दिस विल बी fxy प्लस 1। मतलब मेरा जो ये फंक्शनल इक्वेशन है ये अभी क्या बन रहा है, hx इंटू hy इज इक्वल्स टू h ऑफ xy। ये मेरा स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन है, यस और नो, ये मेरा स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन है। हम लोग क्या सीखे थे, इफ f ऑफ xy इक्वल्स टू fx into fy, then we will say that fx is equals to x to the power a. Correct? Therefore, यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, hx is x to the power a. Is it clear to all of you? hx is x to the power a. लेकिन hx मेरा क्या है, fx plus 1 which is equals to x to the power a. मतलब क्या हुआ, fx is x to the power a minus 1. अभी यहां पर मुझे जो वैल्यू दिया हुआ है वो है f2 equals to 7. देखो f2 equals to 7 मतलब क्या हुआ, fx मेरा क्या है, x to the power a minus 1, तब f2 क्या होगा, f2 होगा 2 to the power a minus 1 which is equals to 7. इसका मतलब क्या हुआ, 2 to the power a is 8, मतलब 2 to the power a is 2 cube, that implies a is nothing but 3. मतलब मेरा जो फंक्शन है वो फंक्शन अभी क्या बना, fx अभी क्या बना, ये बना x to the power 3 minus 1. Is it clear? So fx is x cube. अभी बोला है क्या, अभी कुछ भी बोले निकालना बहुत ही सिंपल है। वो लोग बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ f of minus 2. So f of minus 2 will be minus 2 to the power 3 minus 1. That gives us minus 9. So इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर मेरा आएगा minus 9. That's it. Have you understood how I'm approaching those kind of sums? कुछ भी तुम्हें प्रॉब्लम दे दें, तुम ट्राई करो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आने के लिए। The moment you get the standard form, you find out the constant by given condition. और एक बार तुम्हें कांस्टेंट मिल गया मतलब क्या हुआ, तुम्हें फंक्शन मिल गया। और अगर फंक्शन मिल गया तो वहां पर जितना भी प्रॉब्लम्स ट्विस्टेड हो क्यों ना, वहां से तुम सॉल्व कर सकते हो जो भी दिया हुआ है, जो भी बोला है टू फाइंड आउट।
इज इट क्लियर? हम लोग का मेन मोटो क्या है? मेन मोटो है टू फाइंड आउट द फंक्शन इफेक्ट्स फ्रॉम द गिवन फंक्शनल इक्वेशन, राइट? चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो बच्चों, यहां पर सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम हमने चूज किया। यहां पर क्या बोला है? if x into fy equals to f of xy plus fx plus fy minus 2. I will suggest all the students to pause the video right now and try this problem by your own. If you cannot do it, then come and see the solution. Okay? ये functional equation is true for all x, y belongs to R. Right? So इसको कैसे करेंगे? Same method we will try to apply here. I will manipulate in such a way so that it comes and falls into our standard functional equation. Is it clear? अभी हम क्या कर रहे हैं? देखो, हम both sides 1 add कर दे रहे हैं. I am adding 1 in both sides. So we are having लेफ्ट हैंड साइड में इसको और इसको एक ब्रैकेट में ले लिया, माइनस एफ वाई. इफ आई टेक कॉमन फ्रॉम दिस टू, वी आर गोइंग टू हैव इज इट क्लियर? सो वी कैन राइट दिस थिंग एज 1 minus fy equals to fxy minus 1. मतलब क्या हुआ? fx minus 1 into fy minus 1 equals to f of xy minus 1. चलो बच्चों एक काम करते हैं, फिर सेम मेथड. लेट अस से hx is fx minus 1. मतलब क्या हुआ? hy will be fy minus 1, hxy will be fxy minus 1. मतलब क्या हुआ मेरा? Equation is coming something like this: hx into hy is equals to hxy. Okay? So देखो बच्चों, यहां पर मुझे फिर से स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन मिल गया. hxy is hx into hy. इसका मतलब क्या हुआ? We will take hx as equals to x to the power a. Now hx मेरा क्या है? fx minus 1 which is equals to x to the power a. इसका मतलब बच्चों हुआ fx is x to the power a plus 1. अभी क्या बोला है? f2 is 5. What is f2? It is 2 to the power a plus 1 which is equals to 5. मतलब क्या आया? 2 to the power a is 4 which is equals to 2 square. इसका मतलब ये हुआ a is nothing but 2. राइट? अगर a तुम्हें 2 मिल गया मतलब मुझे fx मिल गया. fx क्या है? It will be x square plus 1. Yes or no? It will be x square plus 1. Right? अभी तुम्हें क्या बोला है? To find out the value of f of 4. तो f of 4 क्या होगा? बड़ी सिंपल है. Simply x का जगह में 4 पुट कर दो. So we are getting 16 plus 1, that is 17, and that is your answer. Is this kind of problems are clear to you? क्या देख रहे हो यहां पर? कि यहां पर मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, हम थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ रहे हैं और उसके बाद हम तुरंत fx मेरा निकल आ रहे हैं. क्लियर? ओके. नाउ सी दिस प्रॉब्लम. यहां पर बोला है f of x plus y plus 1 is equals to root over of fx plus root fy whole square. और दिया हुआ है क्या? f0 is 1 and we have to find out fx क्या है.
And this functional equation is true for all x, y belongs to real value. In place of x and y, you can put anything. कैसे करोगे? ओके, एक काम करें, देखो f0 is 1. f0 is 1. तो हम एक काम करते हैं, इस y का जगह में हम लोग 0 पुट कर दे रहे. अगर हम पुट कर दे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा? f of x plus 1 is equals to root over of fx plus root of f0 का होल स्क्वायर. मतलब क्या आया? f of x plus 1 is equals to root over of fx plus 1 का होल स्क्वायर. Is it clear to all of you? Absolutely. Okay. इस स्क्वायर को पहले हटा दो. मतलब अंडर रूट f of x plus 1 equals to रूट ओवर ऑफ fx plus 1. इसका मतलब क्या हुआ? रूट ओवर ऑफ f of x plus 1 minus root over of fx is equals to 1. Is it clear? So मुझे मिला क्या? रूट ऑफ f of x plus 1 plus root of fx. This is equals to 1. और यहां से मुझे निकालना है what is my fx. क्या कर रहे हैं हम लोग? देखो, in place of x we are putting, let us say 1, 2, 3 so on till x. Okay, so we are having root over of f of, if I put x equals to 1, we are going to get f of 2 minus root over f of 1 is equals to 1. Then when we are putting x equals to 2, we are getting under root f of 3 minus root over f of 2. This is equals to 1 again. Then again when we are putting x equals to 3, we are getting, again this is 1, and this thing goes on. For how many times? For x times. So for the last one we will have, when we put in place of x as x, we are going to have, which is again equals to 1. Now if I add all those terms, we will have, look it carefully, if we add all the corresponding terms, this term goes off, this term goes off, and this thing goes on. So naturally, this term, ये term क्या होगा? इसका जो previous term है, उससे कट जाएगा. तो मेरा पास बचेगा क्या? Which is equals to, देखो बच्चों, यहां पर हम लोग कितना बार x का वैल्यू पुट किया है? फॉर x टाइम्स. इसका मतलब राइट हैंड साइड में मेरा क्या होगा? 1 into x, नथिंग बट x. अभी हम लोग जो इक्वेशन मुझे मिला वो क्या है? रूट ओवर ऑफ f of x plus 1 equals to x plus रूट ओवर ऑफ f of 1. ओके, सो बच्चों अभी सवाल ये आता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट ऑफ f of 1. अभी देखो मेरा पास जो है वो क्या है? द फंक्शनल इक्वेशन इज दिस. यहां से मुझे f1 का वैल्यू निकालना है, अदरवाइज ये सम कंप्लीट नहीं होगा. तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? एंड वी आर हैविंग f0 एज 1. ओके, सो हम क्या कर रहे हैं? इस फंक्शनल इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं? x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 0 पुट कर दे रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में तुम ऑब्जर्व करो, मुझे f1 मिलेगा. राइट, f1. राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा? रूट ओवर ऑफ f0 प्लस रूट ओवर ऑफ f0. और f0 का वैल्यू मुझे पता है, विच इज 1. सो इट विल बी 1 प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब कितना आ रहा है? 2 स्क्वायर, मतलब आ रहा है 4. इसका मतलब यह हुआ कि f of 1 का वैल्यू इज 4. देयरफॉर रूट ओवर ऑफ f of x प्लस 1, ये मेरा क्या आ रहा है? x प्लस रूट 4. सो दैट गिव्स अस x प्लस 2. ओके, मतलब f of x प्लस 1 मुझे क्या मिल रहा है? x प्लस 2 का होल स्क्वायर. अच्छा,
मतलब हम लोग कैसे लिख सकते हैं? x प्लस 2 का होल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1 का स्क्वायर, और अभी x प्लस 1 को हम रिप्लेस कर दे रहे हैं x से. सो व्हाट वी आर गोइंग टू हैव? ओके, सो वी गॉट fx is nothing but x plus 1 का होल स्क्वायर. इज इट क्लियर? बच्चों समझ में जा रहा है? अगर कोई भी डाउट हो रहा है प्लीज कमेंट में लिख के मुझे बोलो, so that I can answer your doubt in the comment, as well as if necessary I will definitely discuss that problem in my next class. Right? चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, यहां पर क्या बोला है? f of x plus ay, comma, this is ordered pair, x minus ay is axy. यहां से मुझे बोला है f of xy निकाल. कैसे निकालेंगे? देखो, हम लोग पहले ले रहे हैं, let x plus ay is let us say t1, और x minus ay ये कितना? t2. ओके ओके, नाउ यहां से हम x और y का वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? क्योंकि व्हेन आई विल रिप्लेस इट t1 और t2 से, सो राइट हैंड साइड को भी मुझे t1 और t2 से रिप्लेस करना पड़ेगा. इसके लिए हम यहां से x और y का वैल्यू निकाल रहे हैं. देखो कैसे, बड़ी सिंपल है. दोनों को हम ऐड कर दिया, सो x क्या आ रहा है? t1 प्लस t2 बाई 2. ओके, अभी दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या मिल रहा है? 2ay इक्वल्स टू t1 माइनस t2, मतलब y कितना आ रहा है? t1 माइनस t2 बाई 2a. ओके, अभी जो दिया हुआ है फंक्शनल इक्वेशन, ये जो फंक्शन मुझे दिया हुआ है उसमें अगर हम रिप्लेस कर दे तो मुझे क्या मिलेगा? f of t1 t2 is equals to a times x का जगह में हम लोग लिख रहे हैं t1 प्लस t2 बाई 2, और y का जगह में हम लोग लिख रहे हैं t1 माइनस t2 बाई 2a. मतलब कितना आ रहा है? t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4. Yes or no? So f of t1 comma t2 is t1 square minus t2 square divided by 4. Okay, so from here we can write f of x comma y equals to x square minus y square divided by 4. And that's exactly what they want. They want f of xy. Here f of xy is x square minus y square divided by 4. Very good. Let us move for the next problem. देखो बच्चों, ये सम क्या दिया है? यहां पर बोल दिया है f of x plus y is fx into fy. And this functional equation is true for all xy belongs to natural number n. मतलब यहां पर x और y का जगह में any natural value you can put. अभी from the standard functional equation what we can say, f of x plus y equals to fx into fy. मतलब क्या हुआ? fx is coming to a to the power x, right? अभी देखो बच्चों, यहां पर कंडीशन क्या दिया है? f of 1 is 2, मतलब f of 1 क्या होगा? which is equals to 2. मतलब क्या हुआ? a is 2, राइट? a is 2. इसका मतलब मेरा fx कितना आया? मेरा fx आया 2 to the power x. ओके, पहला काम मेरा क्या है? टू फाइंड आउट fx. अभी जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है वी विल ट्राई टू फॉलो दैट. यहां पर बोला है सिग्मा n starts from 1 to n f of k plus m is equals to 16 into 2 to the power n minus 1. अगर ये है देन यहां से मुझे निकालना है मेरा k का वैल्यू क्या है. सिंपल सम. अभी देखो, the moment we get fx is 2 to the power x, so we can write f of k plus m क्या होगा बच्चों?
2 to the power k plus n, मतलब which is equals to, अभी देखो 2 to the power k plus m को हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power k into 2 to the power m, राइट? अभी 2 to the power k में तो m कुछ नहीं है, तो इसको हम बाहर निकल सकते हैं, सिग्मा का बाहर. सो व्हाट वी कैन राइट, 2 to the power k सिग्मा का बाहर निकाल दो, सिग्मा m is from 1 to n, 2 to the power m equals to 16, 2 to the power n minus 1, right? So it is 2 to the power k. अभी सिग्मा हम रिमूव कर रहे हैं, so I will write 2 square, 2 cube, and so on, 2 to the power n, which is equals to 16 into 2 to the power n minus 1. अभी बच्चों ये तो मेरा जीपी सीरीज में है, जिसका फर्स्ट टर्म इज 2 and common ratio is also 2. So what we can write, 2 to the power n minus 1 divided by 2 minus 1, which is equals to 16 into 2 to the power n minus 1. मतलब क्या आ रहा है, 2 to the power k plus 1 into 2 to the power n minus 1 is equals to 16 into 2 to the power n minus 1. अभी बच्चों 2 to the power k plus 1 equals to, I can write equals to 16. क्यों? अगर तुम कंपेयर करोगे तो देखोगे कि यहां पर 2 to the power k plus 1 ये किसका बराबर हो रहा है, 16 का बराबर हो रहा है. ओके, क्योंकि 2 to the power n minus 1 तुम बोथ साइड से कैंसिल भी कर सकते हो, राइट? क्योंकि यहां पर मेरा जो n है ये क्या ले रहे हैं, यहां पर जो n है वो n क्या है, फ्रॉम दिस सिग्मा यू कैन फाइंड आउट दैट योर n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1. मतलब 2 to the power n minus 1 ये कभी जीरो नहीं होगा, राइट? इसको जीरो होने के लिए क्या होगा, 2 to the power n को 1 होना पड़ेगा, और 2 to the power n को 1 होने से n को जीरो होना पड़ेगा, जो यहां पर संभव ही नहीं है, राइट? इसके लिए यू कैन कैंसिल 2 to the power n minus 1 from both sides. So we are having 2 to the power k plus 1 is 16, which is equals to 2 to the power 4. Therefore, k plus 1 is 4. That implies k is nothing but 3. So that is the required value of k, which is equals to 3 in this case. Have you understood the problem? Absolutely. Okay, so let's end our class here. I hope you people have understood the second part of functional equation. In the third class, in the next class, we are going to bring the functional equation but little tougher problems. Okay? So I hope you have enjoyed the class. If you are new to my channel, please do subscribe and press the bell icon so that you get notified about all the new videos I upload in this channel. And those who like my class, definitely press the like button and share it with your friends. And don't forget to comment me. Your one comment inspires me to produce, to give you more videos like this kind. We are having our learning app in Google Play Store. You can download it. The link has been given in the description box. There I used to come twice a week live. So you can ask me your any doubt in mathematics. So see you in my next class. Till then, goodbye and take care.